Assalamu alaikum, everyone. Let's start paper 1, multiple choice question of O-level chemistry, May, June 2024, variance 11. Let's see what we have in this paper. A scientist heats a sample of a liquid. Okay, so we have a liquid. Okay, so when we heat it, according to my lecture, it will turn to gas. Okay. The scientist measures the temperature of the sample and plot a graph of the temperature against time. This graph we have done in the class. X-axis पे time है, temperature has to be on the y-axis. Which statements are correct? So between point W and X, the temperature increases and the particles move faster. Obviously, this is your liquid. This is your liquid plus gas. And this is your only gas. So from here to here, temperature rises. So first statement is correct. Next, between point X and Y, there is no change in temperature. That's true. Because energy is needed to change a liquid into a gas. That's also true. The second statement is also true. We have done these two statements in the class, right? Next is between point Y and Z, the particles move further apart. Obviously, between Y and Z, gaseous state exists. In gaseous state, particles are very far away from each other. So third statement is also right, which means A is going to be the right answer. Okay. Next question. A sample of substance X contain iron and sulfur only. So when iron and sulfur react together, iron 2 sulfide is formed, जिसका formula है FeS. Iron has a mass of 56, sulfur has a mass of 32. In which row is it possible for both statement about X to be correct? So first of all, we have iron, which has a mass of 56, and we have sulfur, which is a mass of 32. Okay. So अगर हम 8 से इसको डिवाइड करें और इसको भी 8 से डिवाइड करें, so it's going to be 7:4. So I'll get the simplest ratio, that is 7 and 4. Option A, X is a mixture with the ratio 4:7 by mass of iron. Since the ratio is 7:4, which means option A is incorrect. Option B, X is a mixture with the ratio 7:4 by mass of iron and sulfur. That's right. X is a compound with the ratio 7:4 by mass of iron and sulfur. Obviously, when iron 2 sulfide is formed, this iron 2 sulfide is a compound, and this compound also has the same ratio, which means this statement is also correct. And therefore, B is going to be the right answer. But let's talk about C also. X is a mixture with the formula FeS. Mixture consists of many molecules or compounds, right? So mixture doesn't have a formula of FeS. So अगर FeS formula है तो इसका मतलब वो mixture नहीं हो सकता, which is why this statement is incorrect and therefore C is incorrect. X is a mixture. FeSO4 is a compound, which means it is not a mixture. Again, D statement is incorrect and therefore D is also incorrect. Okay. Let's move on to the third question. A chlorine atom Z has a nucleon number of 7. Chlorine has two different isotopes. The first one is 35. And the other one is 37. And both the isotopes have same atomic number, right? That is 17. So examiner is talking about this particular isotope. So we have total 17 electrons. So first shell contain 2, 7 shell contain 8, third shell contains 7. So the second shell contain how many electrons? 8, right?
and number of neutrons. So 37 minus 17 is going to be the neutron. So it's going to be 20. So 20 is here, 20 is here, and therefore D is going to be the right answer. Okay. Because examiner was looking for an answer of number of electron in the second shell. So second shell में कितने electrons थे हमारे पास? 8. तो 8 ये भी है, 8 ये भी है. और जाहिर सी बात है 37 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे. तो न्यूट्रॉन्स 20 ये भी है. तो राइट आंसर इज डी. नाउ द नेक्स्ट इज व्हिच पार्टिकल आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट. आइसोटोप्स की डेफिनेशन हमने क्लास में डिस्कस की है. आइसोटोप्स हैव same number of protons and electrons but different number of neutrons. All right, so same number of protons and electrons सबसे पहले देखते हैं. So ये same number of protons and electrons है और आप नोट करें इनके number of neutrons different हैं, which means Y and Z both are isotopes of each other, both are isotopes of the same element. So Y and Z, which means C is going to be the right answer. Obviously ये भी incorrect because अगर ये 25 प्रोटॉन्स है तो इनको भी 25 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था. अगर ये 25 प्रोटॉन्स हैं तो इसको भी 25 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था. सिंस दीज इलेक्ट्रॉन्स आर लोअर देन प्रोटॉन्स, इसका मतलब दीज आर द कैटाइंस, और आइसोटोप्स जो हैं वो कैटाइंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. ओके, आइसोटोप्स हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दे डोंट हैव एनी चार्ज. Statements about graphite and silicon 4 oxide are given. By the way, graphite and silicon dioxide both are giant covalent and exhibit covalent bonding with lots of structure, with lots of strong covalent bond. So which statement is correct? Silicon 4 oxide is found as an impurity in iron ore. That's true. That's true because iron ore is hematite ore, and hematite ore has silicon dioxide as an impurity. Let's move on to the next statement. The angles between atoms in silicon dioxide is 109.5 degree, and in graphite are the same. Graphite has 120 degree, and obviously they are not same. So statement B is incorrect. So graphite has 109. Oh my goodness, hold on. Silicon dioxide has an angle of 109.5 degree, and graphite has an angle of 120 degree. Obviously they are not same. The melting point of silicon 4 oxide and graphite are high. That's true because ionic bonds. So this statement, ionic bonds, is incorrect because both of them exhibit lots of covalent bonds. So statement C is incorrect. Next, when graphite acts as a lubricant, the covalent bonds between the layers are broken. The covalent bonds between the layers are not broken because अगर covalent bond break हो गया तो फिर graphite exist नहीं कर सकेगा, as a lubricant भी behave नहीं करेगा. So the layers of graphite can slide over each other because the layers of graphite are held together by van der Waals forces. So covalent bond intact रहते हैं, van der Waals forces जो हैं उनकी वजह से वो layers slide करती हैं एक दूसरे के ऊपर. So D is a statement is incorrect, and therefore A is going to be the right answer. Question number 6, a statement about empirical and molecular formulae are given. Which statement is correct? The empirical and molecular formulae of a compound are always different. This zaruri to nahi, because when we talk about C3H8 तो जो and CH4, तो अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो यही एम्पेरिकल फॉर्मूला है. तो जरूरी नहीं होता कि वो डिफरेंट हो, हमेशा सेम भी हो सकते हैं. लाइक अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है, अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी है. सो मुझे लगता है कि स्टेटमेंट जो ए है वो इनकरेक्ट है. सेम नहीं होते समटाइम्स, नहीं सॉरी, डिफरेंट हमेशा डिफरेंट नहीं होते हैं, समटाइम्स सेम भी होते हैं, which is why option A is incorrect. The empirical formula of ethyne is C2H2 and benzene is 6H6 are same. That's true because C2H2 है आपके पास, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा so it's going to be CH,
आपके पास C6H6 है, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो इट्स गोइंग टू बी CH। नाउ ये दोनों के दोनों एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो गए, व्हिच इज व्हाई B इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। The molecular formula always shows the simplest whole number ratio of the different atoms or ions in a compound. Not necessarily. The empirical formula always shows the number and the types of different atoms in one molecule, or simplest empirical formula shows the simplest ratio of different types of atoms. Okay. Question number 7. What is the relative formula mass of aluminum oxide? So aluminum oxide has a formula of Al2O3. Now aluminum has a mass of 27 multiplied by 2. Oxygen has a mass of 16 multiplied by 3. So 27 multiplied by 2 plus 16 multiplied by 3 is going to be 102. So 102 is the molecular mass. So C is going to be the right answer. How many ions are there in 16 gram of anhydrous copper sulfate? By the way, examiner is looking for the ions in 16 gram of anhydrous copper sulfate. So anhydrous copper sulfate has a mass of has a formula of CuSO4. Copper is 64, sulfur is 32, oxygen is 16 times 4. So technically the MR of copper sulfate is 160. Let me find out the moles of copper sulfate, which is 16 divided by 160. So it's going to be 0.1. All right. Now in the next step, copper sulfate ionizes into its copper ions and sulfate ions, which means 1 mole gives you 2 moles of ions. So if you have 0.1 mole, so you will get how much moles of ions? 2 moles of ions. So in order to calculate how many ions, we need to multiply this value by Avogadro constant, which is 6.02 times 10 to the power 23 into 2 multiplied with 6.02 exponent 23. So it's going to be 1.204 into 10 to the power 23. 1.20 into 10 to the power 23. So A is going to be the right answer. Okay. Which sample contain the most atoms? Most atoms. This is water. It has 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. ये 1 मोल है, ये 3 मोल्स हैं. तो अगर आपके पास ये 0.5 मोल है, तो ये कितना होगा? 0.5 times 3 is going to be 1.5 mole. 1.5 moles of atoms. Next, carbon dioxide has 1 carbon and 2 oxygen atom. So ये 1 मोल है, ये 3 मोल है. अगर आपके पास ये 1 मोल है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा? ये भी 3 मोल ही रहेगा. And we need to find out the most atoms. Okay. So this is methane. It consists of 1 carbon and 4 hydrogen atoms. So technically 1 mole of methane has 5 moles of atoms. तो अगर आपके पास ये 1 मोल है तो obviously 5 moles of atoms आएंगे यहाँ से. Last option, HCl has 2 atoms, 1 hydrogen and 1 chlorine. So 1:2 का रेशियो है. अगर आपने 2 moles लिए हैं, so atoms भी 4 moles of atoms हो जाएंगे, right? जिसके सबसे ज्यादा moles of atoms हैं, वो आपका आंसर होगा. एंड ऑब्वियसली राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, बिकॉज 5 moles of atoms आ रहे हैं वहां पर. सही है. ओके, नेक्स्ट
The reaction shown all produces hydrogen. Which reaction produces the greatest volume of hydrogen measured at room temperature and pressure? 1.4 gram of carbon, 1 divided by 12 into 24. So it's going to be how much? 1 divided by 12 into 24. It's 2 dm cube, because carbon and hydrogen both has 1:1 ratio. तो जो भी मोल्स आएंगे एग्जैक्ट वही मोल्स हाइड्रोजन के होंगे. जो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो आप वॉल्यूम ऑफ आरटीपी से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. दैट्स अ शॉर्टकट टेक्निक. ओके, दिस इज 2.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड. सो कैल्शियम हाइड्राइड का एमआर सबसे पहले निकालिए. कैल्शियम इज 40 प्लस 2, 42. सो इसका एमआर है 42. मैं एक कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं आपको. ये है 2.4 डिवाइडेड बाय 42. सो ये आपके पास मोल्स आ जाएंगे कैल्शियम हाइड्राइड के. जो मोल्स कैल्शियम हाइड्राइड के आपने कैलकुलेट किए हैं एग्जैक्टली वही मोल्स हाइड्रोजन गैस की नहीं होंगे, बिकॉज दोनों के दरमियान 1:2 का रेशियो है. सो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे 0.114. और 0.114 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 डीएम क्यूब से, तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आएगा विच इज 2.74 डीएम क्यूब. ओके, थर्ड 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम. सो सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट करते हैं. 4 डिवाइडेड बाय 40, यू विल गेट 0.1 मोल. जो मोल्स कैल्शियम के एग्जैक्टली वही मोल्स हाइड्रोजन के, बिकॉज ऑफ 1:1 रेशियो. तो इसको अगर मैं 24 डीएम क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा. दैट इज 2.4. Okay, next is 50 cm cube of 2 mole per dm cube sulfuric acid. So first of all, let me find out the moles of sulfuric acid. फिफ्टी को मल्टीप्लाई करो 2 से, डिवाइड करो 1000 से, you will get moles. 100 divided by 1000, so it's going to be 0.1 mole. And obviously sulfuric acid and hydrogen has 1:1 ratio. तो जो मोल्स आपने सल्फ्यूरिक एसिड के कैलकुलेट किए वही हाइड्रोजन के भी होंगे. सो अगर मुझे हाइड्रोजन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 24 से, so it's going to be 2.4 dm cube. अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहे थे कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करो. सो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कहां पर है? 2.74 आपने डिटरमिन किया है, which means B is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Okay, let me check my calculation. 1 divided by 12, carbon का mass is 12, 224, 2, सही. Hold on, 2.4 divided by 42, multiply by 2 into 24, सही है. कार्बन का मास 1.4 divided by 12 into 24,000, 2800 आ रहा है. ओ
2800 क्या? Hold on, 1 divided by 12, ये moles आ गए, 24,000 से करो. Oh my goodness, 1 divided by 12, so I'll get, shoot, 1.4 divided by 12 is going to be this much, divided by 24,000, so 2800. सही है. Hold on, इसका आंसर आ रहा है in terms of CMQ is 2800 CMQ. Oh my goodness, my bad. This is 1. Examiner is given 1.4. Oof. Hold on. Oh, I got my mistake. 1.4 divided by 12. Hold on. 1.4 divided by 12. So I'll get 0.116 6 moles. जो moles इसके हैं वही moles hydrogen gas के भी होंगे, multiply by 24. So it's going to be 2.8. So 2.8 dm cube. And obviously 2.8 dm cube is greater than this one. इसका मतलब A is going to be the right answer, okay? So अगर मैं 0.114 को multiply कर दूं 24 से, so it's going to be 2.7 2.736 dm cube. Okay. So right answer is A. You guys have to be very, very careful while taking the values, okay? While using the values. Anyhow, let's move on to the next question. Oh God, another calculation. 4 solutions of NaOH are made by dissolving solid NaOH in distilled water. Which method makes a solution with a concentration of 0.1 mole per dm cube? So this is 1.6 gram of NaOH. So first of all, get the moles of NaOH. So 1.6 divided by 40, which is the MR of NaOH. So I'll get the moles. 1.6 divided by 40 is basically 0.04 moles. अब ये जो moles आपने calculate किए हैं, ये technically is 400 cm cube में है. So अगर आप concentration find out करना चाहते हो तो हम 1000 cm cube से compare करेंगे. So 0.04 into 1000 divided by 400, so it's going to be 0.1 mole per dm cube. So examiner ये तो कह रहे थे कि कौन सा solution ऐसा है जो ये concentration देगा 0.1, और solution A से मुझे 0.1 concentration मिल रहा है, इसका मतलब A is going to be the right answer. इसका मतलब B, C, D डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज कैलकुलेशन का फॉर्मेट यही होगा B, C के लिए भी एंड D के लिए भी. Next is which row shows the substances that can be electrolyzed. Electrolyzed मतलब undergoes electrolysis, must be an electrolyte though, right? So sodium chloride conducts electricity, yes. And molten lead to bromide conducts electricity, yes. Graphite and copper can conduct electricity, but they are not acting as an electrolyte. They usually acts as an electrode, and at electrode there will be no chemical change, because in electrolyte there is a chemical change takes place, right? So copper can conduct electricity, graphite can conduct electricity, but both of them acts as an electrode, not as an electrolyte. So obviously I think B is going to be the right answer. Okay. The apparatus shown is set up to electroplate a steel key with copper. Okay. The key does not get coated with copper. Which change needs to be made to electroplate the key?
अच्छा जी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्राइटेरिया ये है कि जो आपका एनोड होता है, इट हैज टू बी एन impure copper, and obviously it is a positive electrode. जो आपका कैथोड होता है, it is negative electrode, and it has to be the metal object. So this is anode and this is cathode. So these terminals needs to be reversed. It should be negative, it should be positive, so that ये इस क्राइटेरिया को फॉलो करे. देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका impure electrode है. It has to be at the anode, so this has to be the positive charge. This is your metal object, it has to be at the cathode, which means it has to be the negative charge. It has to be negative, right? So क्यों नहीं कर रहा वो इलेक्ट्रोप्लेट, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने टर्मिनल्स जो हैं वो स्वैप कर दिए हैं. तो ये टर्मिनल्स जो हैं वो स्वैप होने, टर्मिनल्स जो हैं वो चेंज होने चाहिए. तो इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्वस कॉपर सल्फेट, नॉट एट ऑल. टर्मिनल्स वर डिफरेंट. Increases the electric current, not at all. Replace the solution with dilute sulfuric acid, not at all. So obviously D is going to be the right answer, because reverse the electrical connections. This has to be the anode, that is positive, and this has to be the cathode, which is negative. So we need to reverse the electrical connection so that reaction takes place. And so copper is coated on the metal key or steel key. Okay, तो ये जो टर्मिनल्स थे ये गलत दिए हैं, इनको रिवर्स करना है. Next, ammonium nitrate dissolves in water. Which statements are correct? Reaction is endothermic because delta H is positive. Okay, so if it is an endothermic reaction, obviously energy is absorbed from surrounding to system. इस केस में जो सराउंडिंग है वो वाटर है, और इस केस में जो सिस्टम है वो अमोनियम नाइट्रेट है. इसका मतलब एनर्जी जो है वो वाटर से निकलकर अमोनियम नाइट्रेट अब्सॉर्ब करेगा. तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट. द वाटर गेट्स कोल्डर ड्यूरिंग द प्रोसेस. दैट्स ट्रू, बिकॉज अगर वाटर जो है वो सराउंडिंग है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा. So when water acts as a surrounding and obviously temperature drops, feels colder. Okay. Next, thermal energy is absorbed by the ammonium nitrate from water. बिल्कुल सही बात है. एनर्जी वाटर से निकल के अमोनियम नाइट्रेट में जाएगी, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी. तो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. सो ऑब्वियसली ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Hydrogen reacts with oxygen to produce water. Some bond energies are shown. Use the data in the table. What is the enthalpy change of the reaction? ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है. सबसे पहले रिएक्टेंट की बात करते हैं. The bond energy of hydrogen is 436. How many moles we have? We have 2 moles of hydrogen, right? So into 2 करेंगे. 436 times 2 is going to be 872. And obviously oxygen has a bond energy of 496 plus 496, 1368. Okay, the total bond energy absorbed in breaking these covalent bonds is 1368 kilojoules.
Let's talk about product now. A product has water and water has OH ka bond. So we have OH bond energy, which is 463. How many OH bonds we have? 1, 2, 3, and 4. So multiply by 4. 463 into 4 is going to be 1852. So this is the total energy released in making the bonds. We need to find out the delta H, enthalpy change, and for that, enthalpy of reactants minus enthalpy of product. Reactant is 1368 minus product is 1852 minus 1368, 486. Sorry, 484 kilojoules per mole. So right answer is going to be C. Okay. Silicon 4 chloride SiCl4 boils at 58 degrees Celsius. So if it is boils, इसका मतलब it exists in liquid state. Because liquid boil होता है ना हमेशा. Okay. Which row shows the type of change when silicon 4 chloride boils at the explanation? Obviously liquid boil होता है तो it turns into gas. So liquid से gas में आना is a physical change, not the chemical change. इसका मतलब option है, option B गलत. An explanation is silicon 4 chloride has a simple covalent molecule, and all simple covalent molecule exhibits van der Waals forces. So जब भी state change होती है किसी भी simple covalent molecule की, उसकी जो van der Waals forces हैं वो overcome होती है, right? And van der Waals forces also called intermolecular forces. So this statement is right. So right answer is going to be obviously C. Okay. We have done all these statements, but इस तरह के MCQs के लिए आपको एक एक छोटी से छोटी बात याद होनी चाहिए अपने लेक्चर की, अपनी इंफॉर्मेशन की, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है. सो आप नोट कीजिएगा, मैंने सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल का टॉपिक पढ़ाया और उस सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल में मैंने ये पूरी एक्सप्लेनेशन दी है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल, हमेशा वैन डर वाल्स फोर्सेस ओवरकम होती हैं, और वैन डर वाल्स फोर्सेस को हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस भी कहते हैं. ठीक है. कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होता मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के केस में. सो 16 आंसर इज गोइंग टू बी सी. Let's talk about 17. 2-gram sample of calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid as shown. Which change in condition makes the reaction proceed more slowly? More slowly. Any slow rate of reaction. तो अगर slow है so concentration lower कर दो. Low temperature कर लो. सही है. Lower surface area कर लो. Because जब surface area कम होता है तो rate of reaction ज्यादा होता है. नहीं. Oh, not lower. Higher surface area. Higher the surface area, higher the rate of reaction, and size of particle increase कर लो. Size of particle का मतलब अगर पहले आप पाउडर ले रहे थे तो सॉलिड ले लो, तो जब सॉलिड आएगा तो वो बड़ा पार्टिकल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया टेक्निकली आप कम कर रहे हो. सही है. सो आप नोट कीजिए, ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट बिकॉज एग्जामिनर जो है वो इंक्रीज कर रहा है. ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, एग्जामिनर टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है. ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज एग्जामिनर सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑब्वियसली बी, बिकॉज आप जो सॉलिड पार्टिकल का साइज है उसको बढ़ा रहे हैं, यानी आप पाउडर से उसको सॉलिड लेके जा रहे हैं, लम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा. सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर.
Okay, my goodness. Excess aluminum reacts with dilute hydrochloric acid. The hydrogen given off is collected in a gas range. Okay, the total volume of hydrogen in the gas range is recorded every 2 minutes. The result of this experiment are shown. The total volume of hydrogen gas collected in the gas range is 143 cm3. Okay, which statement is correct? Okay, which statement is correct? The mass of aluminum added is 0.107 gram. Okay, let me find out. ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं. तो सबसे पहले तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हम डिटरमाइन करते हैं. वी हैव 143, इसको डिवाइड करो 24,000 cm³ से, क्योंकि हमारे पास रूम टेम्परेचर पे हो रहा है ये रिएक्शन. सो 143 divided by 24,000 is going to be 5.95 into 10 to the power minus 3 moles. Okay, now aluminum and hydrogen has 2:3 का रेशियो. अगर आपने हाइड्रोजन कैलकुलेट किया 5.95 into 10 to the power minus 3 moles, so moles of aluminum हमारे पास कितने आ जाएंगे? Divided by 3 into 2 is going to be 3.97 into 10 to the power minus 3 moles. I know the mass of aluminum, I mean relative atomic mass of aluminum, which means I can find the mass. So 3.97 into 10 to the power minus 3 multiplied by 27, which is the AR of aluminum. So मेरे पास आंसर आ रहा है 0.10725 ग्राम, और एग्जामिनर क्या दे रहे हैं 0.107 ग्राम. That's the right answer because बिल्कुल same amount of mass use हुआ है, right? Next statement, the mass of aluminum added cannot be determined from the information given. By the way, मैंने जो information given है उसी से ये mass aluminum का calculate किया. इसका मतलब statement B is incorrect. The highest rate of reaction is 71.5 cm³ per minute. The highest rate of reaction is 75 cm³ per minute. Okay, इसके लिए हम calculate करेंगे बार बार. Highest rate of reaction is calculated. Let me find out. Let me find out. My goodness, that's a lot of calculation in this. अच्छा, चलो 0 से 2 मिनट्स पे जब हम आते हैं, चलें करते हैं 1 by 1. 0 से 2 मिनट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम होता है 3 minus 0, which is basically 3 cm³. सो अगर मुझे रेट कैलकुलेट करना हो इससे रिलेटेड, ओह माय गुडनेस, तो अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, so it's going to be 3 divided by 2. 3 is basically the volume and 2 is basically the time taken. So rate is going to be 1.5. Okay. So हमें एग्जामिनर कह रहे हैं 71.5, तो इसका मतलब ए से तो नहीं मिल रहा हमें, ठीक है, इससे तो नहीं आया. सेकंड वाले को देखते हैं. सेकंड वाला है 2 से 4 मिनट्स. So 2 से 4 minutes, 53 minus 3 becomes 50. And 50 divided by 2, because 2 minutes का इंटरवल चल रहा है. सही.
2 minutes का इंटरवल है सबके दरमियान, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, right? So rate is going to be how much? Oh my goodness, hold on. ये 50 cm cube है और से जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मिस्टेक हो रही है. 50 cm cube, rate तो 50 divided by 2 is basically how much? 25. 75 अभी भी नहीं आया. Then 4 to 6 minutes में देख लेते हैं क्या हो रहा है. 4 to 6 minutes में 103 minus 53 is basically 50 cm cube. तो अगर मुझे रेट कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा 50 divided by 2 is basically 25. फिर between 8 to 6 minutes, 8 to 6 minutes, 131 minus 103. So you will get how much volume? 28 cm cube. So rate is basically 28 divided by 2 is basically 14. Then between 10 and 8 minutes, 141 minus 131, so basically 10 cm cube. So अगर मुझे rate calculate करना हो, so 10 divided by 2 is basically 5. Then 12 to 10 minutes, 143 minus 141 is basically 2 cm cube. So अगर मुझे rate calculate करना हो, so ये हो जाएगा 2 divided by 2 is basically 1. Oh, 143 minus 2. Yeah, 2, तो ये आ जाएगा 1, right? So that's the rate. Rate यहाँ पर मैंने सारे कैलकुलेशन करके देखा, कहीं भी 75 point something नहीं आ रहा, which means this statement is incorrect. ठीक है, ये रेट कैलकुलेट करने का तरीका आ गया. Next is the highest rate of reaction is when acid concentration is highest. By the way, highest rate of reaction हमेशा उस वक्त होता है जब initial rate होता है हमारे पास, because initially the concentration is very high. ठीक, और as the concentration decreases with time, rate of reaction also decreases. ओके, सो इसका मतलब हाईएस्ट रेट जो है वो जब कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ज्यादा होगा ऐसा नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो है वो विद टाइम डिक्रीज होती है, जैसे जैसे जिसकी वजह से रेट भी डिक्रीज होता है. तो हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियली आपको ज्यादा होगा क्योंकि उस वक्त कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बट जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, व्हिच मींस डी स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट एंड देयरफॉर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. बाय द वे, मुझे लगता है कि मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है, राइट? सो आप इसको फॉलो कीजिएगा, मार्किंग स्कीम रॉन्ग है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है? बिकॉज मैंने कैलकुलेशन करके आपको बता दिया कि मास जो है वो टैली हो रहा है इससे, इसका मतलब दिस वर्किंग इज करेक्ट, दिस कॉन्सेप्ट इज करेक्ट. और जो एग्जामिनर ने मार्किंग स्कीम में जो भी आंसर दिया वो होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो ऑब्वियसली गलत है. तो मार्किंग स्कीम को इस क्वेश्चन के लिए फॉलो नहीं कीजिएगा. ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. दैट्स क्वेश्चन नंबर 18. 19, my god, there are so many calculations. 157.75 gram of bismuth chloride is used to make 500 cm cube of solution using distilled water. Oh my goodness. The aqueous bismuth 3 chloride slowly becomes cloudy as it reacts with water to form insoluble precipitates. The reaction is reversible. Which statement are correct?
सो पहली चीज, in a reversible reaction at equilibrium, the rate of forward reaction is always equals to the rate of backward reaction or reverse reaction. The second statement is right because reaction is reversible, so equilibrium achieve karega wo. Next, the initial concentration of bismuth chloride solution is 1 mole per dm3. Now we need to find out this concentration so that हमें ये prove कर सके कि ये concentration सही भी है गलत. We know the mass of bismuth 3 chloride, so we need to find out the MR of bismuth 3 chloride by using these two values. So MR calculate करते हैं पहले bismuth 3 chloride की. Let me find out the MR. 35.5 times 3 plus 209 is going to be 35.3 into 3 plus 209. It's 315.5 MR. Now, first of all, we need to find out the moles of BiCl3. So mass is basically 157.75. Now we need to divide it by MR, which is 315.5. So 157.75 divided by answer is going to be 0.5 moles. In the second step, ये जो moles हैं ये 500 cm cube of solution में है हमारे पास. So in 500 cm cube of solution, we have 0.5 moles of bismuth chloride. So in order to find the concentration, 1000 cm cube से compare करेंगे. So 0.5 into 1000 divided by 500. So, oh my goodness. 0.5 into 1000 divided by 500. So it's going to be 1 mole per dm. Hence proved this concentration tally hogi. Iska matlab first statement is also correct. Next, when more hydrochloric acid is added, the position of equilibrium moves towards left. When you add more hydrochloric acid, obviously it increases the amount of HCl. So this favors the equilibrium towards left hand side, and that's the statement, which means third statement is also correct, and therefore A is going to be the right answer. Okay. Question number 20. The flow chart shows some of the processes and reactions in the formation of ammonia. What are the names of process X, substance 1, and substance 2? By the way, hydrogen is obtained from the cracking of hydrocarbons. Substance 1 is basically long chain alkane, and process X is basically cracking, and substance 2 is basically nitrogen, because nitrogen and hydrogen combine with each other to form ammonia. So nitrogen is obtained from the fractional distillation of liquid air. So substance 2 is nitrogen. Okay, so right answer is basically Na. That's an easy question. Many reactions involve oxidation and reduction. Which statement is correct? Acidified magnate 7 ions changes color from colorless to purple. So this color change is wrong. It has to be purple to colorless. That's what we have done in the class. Okay. All reactions, by the way, all reactions that involves oxidation also involves reduction. जरूरी तो नहीं होता. जरूरी तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अच्छा चलो, मुझे थोड़ा सा है कि अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रही तो रिडक्शन नहीं हो सकती, सिर्फ रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी, बट रीडॉक्स में दोनों हो सकते हैं. दैट्स ट्रू कि रीडॉक्स में ये दोनों हो सकते हैं. ओके, सो एग्जामिनर कह भी रहे हैं कि मैनी रिएक्शंस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है. ड्यूरिंग अ रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूजेस इलेक्ट्रॉन. दैट्स रॉन्ग. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन्स इलेक्ट्रॉन. तो मैंने आपको क्लास में बताया ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है. जब खुद रिड्यूस होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. इसका मतलब स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट डी को देखो.
Reduction is the loss of hydrogen. Reduction is basically the gain of hydrogen. So ये भी गलत. जब A गलत, C गलत, D गलत, तो करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली B. ठीक है. सो अगर आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो कि कौन सा आंसर है, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए था क्योंकि मेरे जहन में बहुत सारे रिएक्शंस हैं रिडॉक्स के, और उसमें कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन होती है लेकिन रिडक्शन नहीं होती, राइट, या रिडक्शन होती है तो ऑक्सीडेशन नहीं होती. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने इसको करेक्ट तो माना कि ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स, बट लेट्स चेक करते हैं बाकी तमाम ऑप्शंस को. तो जब बाकी तमाम ऑप्शंस रॉन्ग हो गई तो करेक्ट ऑप्शन मेरे सामने आ गई. आप क्वेश्चन इस तरह से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि सारी जो रॉन्ग ऑप्शंस हैं उनको जज कर लो तो करेक्ट आपके सामने आ जाएगी ऑटोमेटिकली. ठीक है. क्वेश्चन 22. द इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन इज शोन. This reaction is redox reaction, also called displacement reaction. और क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, इसलिए वो ब्रोमाइड को डिस्प्लेस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमीन. So bromide ion is a reducing agent. No, it is a, oh sorry, it is an oxidizing agent. No, it is a reducing agent. All halides are reducing agent technically, if you remember. Bromine is a reducing agent. Bromine is basically an oxidizing agent. Next, chloride ions are the reducing agent. Weaker reducing agent होता है. Chlorine is an oxidizing agent. That's true. ये बिल्कुल ठीक है. Chlorine is an oxidizing agent. Bromide ions is a reducing agent. अच्छा, स्टेटमेंट सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज इस केस में हम क्लोराइड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो क्लोरीन की बात कर रहे हैं, राइट. सो क्लोराइड आयन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट्स फाइन, बट यहाँ पर क्लोराइड इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, व्हिच मींस सी इज इनकरेक्ट एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ओके जी. Which row describe both pH and the ions with the greatest concentration in aqueous alkali? Greater than 7. So whenever you have greater than 7, solution is alkaline. When the solution is alkaline, concentration of hydrogen ion is lower, concentration of OH negative ion is higher. Okay. So greater than 7 पे concentration of hydroxide ion is greater. So right answer I believe is B. Okay. Less than 7. अच्छा ये गलत है, इसलिए ये तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. अगर लेस देन 7 होगा तो मीडियम एसिडिक होगा. जब मीडियम एसिडिक होता है तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कम होते हैं, तो स्टेटमेंट डी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. ग्रेटर देन 7 अगर होगा तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन आयन कम होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे. एग्जामिनर ने यहाँ पर लिखा है तो ये भी गलत हो गया. कॉम्पिटिशन एक्सिस्ट बिटवीन सी एंड डी. अब देखो लेस देन 7 कह रहे हैं तो इसका मतलब सोल्यूशन एसिडिक है. सोल्यूशन एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन का अमाउंट ज्यादा होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का अमाउंट कम होगा. लेकिन मसला ये कि एग्जामिनर ने यहाँ पर मुझे कोई स्पेसिफिक पीएच बताई नहीं है, बिकॉज पीएच 7 अगर कम है तो वो वीक एसिड भी हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है. अगर वो वीक एसिड है तो फिर ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन का अमाउंट कम होगा, हाइड्रोक्साइड आयन का रिलेटिवली ज्यादा होगा. लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, हाइड्रोक्साइड आयन कम होगा. सिंस देयर इज नो स्पेसिफिक pH is given, which is why I can't decide कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी, which is why मैं इसको भी इनकरेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज pH क्लियर कट गिवन नहीं है इन ऑर्डर टू डिसाइड कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी. Okay, next, the water in a lake is acidic and the fish are dying. The water in the lake needs to be neutralized so that the pH is close to 7. Which compound is added to excess neutralize? Achha, if this lake is acidic and we need to neutralize it, obviously we need calcium carbonate. Right answer is A. That's easy. हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड यूज नहीं कर सकते, हम सॉल्ट यूज नहीं कर सकते न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो डी इनकरेक्ट.
And obviously potassium hydroxide भी use नहीं करेंगे because potassium hydroxide is a strong alkali and strong alkalis are corrosive, right? तो ये पानी को और डैमेज करेगा, फिश और मजीद डिस्ट्रॉय होंगी, डाई हो जाएंगी, इसलिए हम इसको भी यूज नहीं करेंगे. Question number 25. Which pair of reagents is used in the school laboratory to prepare sample of pure barium sulfate? By the way, this is insoluble salt. And insoluble salt are formed through precipitation. And obviously, two soluble salts react together. The two soluble salts react together to give barium sulfate. So two soluble salt, barium carbonate is insoluble, which is why A is incorrect. Barium carbonate is insoluble, which is why B is incorrect. Barium chloride is soluble, sodium sulfate is soluble. दोनों आपस में combined होंगे and obviously barium sulfate बनाएंगे, तो C is going to be the right answer. So precipitation reaction करना होता है. D is also incorrect because it is an alkali. It is an acid. So it's technically not a precipitation, it's a neutralization reaction. Okay. So we need precipitation method, which is why D is also incorrect. Next, the total number of electrons in one atom of an element Q is 17. And one atom of element R is 19. So according to the periodic table, it is chlorine because chlorine has 17 electrons. And according to that periodic table, 19 is the atomic number of potassium because it has 19 electrons. So it is metal, it is non-metal combined together to form an ionic compound. The first statement is incorrect because जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, कोवेलेंट नहीं बना सकते, right? Q forms a positive ion. If Q is a non-metal, non-metal always forms anion, not cation. So statement B is incorrect because Q is non-metal. And non-metal forms anion. Okay. R has more outer shell electrons than Q. That's also incorrect because if R is found in group 1 of the periodic table, which means it has one valence electron or one electron in the last shell. If chlorine found in group 7 of the periodic table, which means it has 7 valence electrons in the last shell. And that means that this element Q has more valence electrons than element R, which is why C is incorrect, and therefore D is going to be the right answer because R is more metallic than S, and that's true because R is potassium, potassium is metal, and chlorine is non-metal. Which statements about groups 8 noble gases are correct? They are unreactive. That's true. They all have full outer shell valence electrons, right? They are all diatomic gases. That's incorrect because these are monatomic gases, not diatomic. So 1 and 2, right answer is going to be B. Next, iron has a high melting point. All transition elements have a high melting point. Statement explain high melting point of a compound. Statement explain high melting point. High melting point reflects the strong electrostatic attraction. Between positive ion
and C of delocalized electrons or C of electrons. So I need to look at this statement. Each iron cation has a strong electrostatic attraction. That's right. To the C of delocalized electron. That's also right. So A is going to be the right answer. Next, in every iron atom, there is a strong attraction between proton and electron. What kind of attraction? They haven't mentioned that, which means B is incorrect. Iron has the same structure as diamond. Not at all, because diamond में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है और आयरन जो है उसमें मेटालिक बॉन्ड होता है. ओके, सो आयरन हैज मेटालिक बॉन्ड जबकि डायमंड हैज कोवलेंट बॉन्ड. So statement C is incorrect. Next, iron is an alloy. Iron is not an alloy. In fact, iron is used to make an alloy. So right answer is A for question number 28. Okay. Next, which statement about alloys is correct? Alloys are not electrical or thermal conductor. Hold on. Hold on, hold on. I'm a little bit confused between this statement and this. I know competition exists between. Okay. Say which statement about alloy is correct? Alloys are not electrical or thermal conductors. Alloys can conduct electricity and they are also good thermal conductor. Alloys are softer than pure. Alloys are harder than pure. Brass is a mixture of copper and a small amount of zinc. I think so. That statement is incorrect. With a small amount of zinc. So निकल नहीं होता, कार्बन भी नहीं होता उसमें, ठीक है, क्रोमियम भी नहीं होता उसमें. The percentage of each metal in alloy may vary. हाँ, ये हो सकता है कि परसेंटेज जो है वो वेरी करे. alloy to alloy वेरी करती है ऑब्वियसली, कुछ में ज्यादा होते हैं कुछ में कम होते हैं. So these correct. Question 30. The table shows the reactions of four metals P, Q, R, and S, and with their and their oxide. What is the order of reactivity from most reactive to the least reactive? सबसे पहले तो ये देखिए रिएक्शन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है. reacts rapidly, no reaction. इसका मतलब S की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि S जो है वो वाटर के साथ भी रिएक्शन कर रहा है रैपिड और HCl के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, और वो कार्बन की ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, कार्बन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा उसका ऑक्साइड. इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी. तो S की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा. सही है, उससे कम किसकी होगी चेक करते हैं. Reacts only with the steam and reacts slowly and there is no reaction. जबकि Q में no reaction and reacts slowly. इसका मतलब Q is less reactive than P. इसका मतलब P is more reactive than S and Q is more less reactive than P and R की reactivity सबसे कम, क्योंकि R जो है वो reaction कर ही नहीं रहा. सही है, R में reaction नहीं हो रहा. So 30th answer is going to be C, क्योंकि ये order सिर्फ और सिर्फ C के अंदर है. Which reaction takes place during the extraction of aluminum from aluminum oxide using carbon electrode? So first statement is right because this reaction takes place at anode. Second statement is also right because this reaction takes place at anode also.
This statement is incorrect because aluminum has a charge of 3 plus. It doesn't have 2 plus charge. So first or second statement, रिएक्शन होता तो है, ये भी एनोड पे होता है. Right answer is going to be B. NPK fertilizers are used to improve plant growth. A solid NPK fertilizer has the properties listed: water soluble and has an aqueous solution with pH 7. pH 7, that means neutral, right? So phosphorus oxide is an acidic oxide, and with acidic oxide, we cannot get the neutral solution, which is why A is incorrect. Potassium hydroxide is basically an alkali. With this alkali, मुझे न्यूट्रल सोल्यूशन नहीं मिल सकता क्योंकि इसकी pH जो है वो 7 से ज्यादा है. So I cannot get neutral solution. Next, ammonium sulfate is fine, calcium nitrate is fine, sodium phosphate. NPK. Ah, I cannot use this because ammonium salts are acidic. Acidic solution. So ये technically मुझे less than 7 pH. So मुझे neutral solution नहीं मिलेगा. तो right answer is going to be D because ये भी neutral solution देगा मुझे. और ये भी न्यूट्रल सॉल्यूशन मुझे देगा. सही है. इस सॉल्ट से मुझे N और P मिल रहे हैं. नहीं, नाइट्रोजन मिल रहा है मुझे और पोटेशियम मिल रहा है मुझे. यहाँ से नाइट्रोजन मिल रहा है, यहाँ से पोटेशियम मिल रहा है और यहाँ से मुझे फॉस्फोरस मिल रहा है. तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? NPK फर्टिलाइजर बना लेंगे. और जब आप इनको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपको न्यूट्रल सॉल्यूशन देंगे जिसकी pH 7 होगी. सही है. एंड both salts are soluble in water. 33. Alkanes are saturated compound containing carbon, hydrogen only. Structure this are saturated hydrocarbons. Which pair of statements are isomers? Isomers में क्या होता है? Same molecular formula but different structural formula. तो 1 2 3 4 5 6 7 7 carbon है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 hydrogen है. Let's count here. 1 2 3 4 5 6 carbon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 C6H14. Let's talk about this. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Let's talk about this. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो आप नोट करें, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ओके, कैसे डिफरेंट है जरा देखो. ये लिखा हुआ है CH3, ये लिखा हुआ है CH3, ये लिखा हुआ है CH2, ये लिखा हुआ है CH2. उसके बाद CH3 है और यहाँ CH2. ठीक है.
फिर CH3 है और फिर CH3 है, जबकि यहाँ CH2 और CH3 है। इसका मतलब दोनों के स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सो बेसिकली 2 and 4 and right answer is going to be D. Which statement is correct? Any compound that contain both hydrogen and carbon is hydrocarbon. Any compound. Because अल्कोहल में भी कार्बन हाइड्रोजन होता है, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं है, बिकॉज उसमें ऑक्सीजन भी आ जाता है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में भी ऑक्सीजन है, तो वो हाइड्रोकार्बन तो नहीं है। सो एनी कंपाउंड का जो स्टेटमेंट है ना, नॉट एनी, ये गलत है। पेट्रोलियम इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम मेनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। ओ भाई, पेट्रोल, नो 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 नो, पेट्रोलियम is not a compound. Crude oil is a compound formed from many different hydrocarbons. पेट्रोलियम तो क्रूड ऑयल की एक प्रोडक्ट है ना। The boiling point of hydrocarbon increases when the chain length increases. ये तो स्टेटमेंट मैंने लिखवा है, as the number of carbon atom increases, strength of van der Waals forces increases and so boiling point increases. So this statement is right. But option D भी देख लेते हैं। The naphtha fraction obtained from petroleum is used for making roads. जो naphtha fraction है वो मेकिंग रोड्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, मेकिंग रोड्स के लिए बिटुमेन इस्तेमाल होता है। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। Compound Q is hydrocarbon that has no structural isomers. Compound Q does not decolorize bromine in the dark. Which compound is Q? Has no structural isomers and does not decolorize bromine in the dark. So ये जो A है ये तो आपका एल्कीन है और ये डिकलराइज कर देगा एक्वस ब्रोमीन को डार्क में, तो ये स्टेटमेंट गलत। C4H8 भी आपका एल्कीन है, ये भी डिकलराइज कर देगा, तो ये भी गलत। कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन B एंड D बिकॉज ये एल्केन है और एल्केन जो है वो डिकलराइज नहीं करेगा एक्वस ब्रोमीन को इन द डार्क। ऑब्वियसली इसका आइसोमर है और मैंने इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बना के दिया आपको क्लास में, 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन इसका आइसोमर नहीं है, मैंने कहा था कि प्रोपेन में कभी भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता, which is why B is going to be the right answer. Okay, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन में कोई आइसोमेरिज्म नहीं होता, एल्केन में जो आइसोमेरिज्म है वो ब्यूटेन से स्टार्ट होता है, और मैंने इसका आइसोमर 2 मिथाइल प्रोपेन बताया आपको। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए चीजें। नेक्स्ट इज which equation represents the reaction of alkane? So जब मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, HCl बनता है। तो फर्स्ट इट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जब इथेन की कंबशन करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है, ये सही है क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबशन दिखा रहे। सो एल्केन अंडरगोज इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कंबशन बोथ, सो ये बिल्कुल सही है, इक्वेशन बैलेंस्ड है। सही है। 2 times 2 4, 4 कार्बन, 2 times 6 12 हाइड्रोजन, 4 plus 6 10, 10 ऑक्सीजन। ये प्रोपेन है, HCl से रिएक्शन नहीं करता कभी भी, हमेशा क्लोरीन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, और कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं देता, वो हमेशा HCl देता है। थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी D only. Ethanol is produced using either ethene or glucose as the starting material. If ethene is the starting material, so catalytic addition यानी reaction का नाम होगा catalytic addition, which is true because all alkenes undergoes addition reaction. Steam is the reagent. Temperature uses 360 atmospheric pressure, which is 60 kilopascal. So that's true. Right answer is A. Let's talk about other options. Ethene, catalytic addition, steam. Temperature is wrong. And pressure is also wrong. When glucose is the starting material, टेम्परेचर ऑब्वियसली ये हो ही नहीं सकता क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम डीनेचर हो जाएगा।
सही है। जब ग्लूकोज रिएक्शन करता है स्टार्टिंग मटेरियल पर, टेम्परेचर सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट एंड ऑक्सीजन, ये गलत है क्योंकि जब भी हम यीस्ट फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं एन एरोबिक कंडीशन यूज करते हैं, यानी विदाउट ऑक्सीजन। ओके, सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बाकी तो सब गलत हो गए। Which diagram shows four pieces of apparatus that are used to measure the volume of liquid? Which piece of apparatus is always filled to the same level? तो सेम लेवल पे सिर्फ और सिर्फ देखो, ये ग्रेजुएशन मार्क है, वॉल्यूम डिफरेंट होगा, यहाँ ग्रेजुएशन मार्क है, वॉल्यूम डिफरेंट होगा, यहाँ ग्रेजुएशन मार्क है, वॉल्यूम डिफरेंट होगा। बस इट हैज नो ग्रेजुएशन मार्क बट ओनली वन मार्क इज हियर। इसका मतलब इट मेजर्स ओनली स्पेसिफिक वॉल्यूम, सेम लेवल पे यही मास में यही वॉल्यूम मेजर करेगा। तो राइट आंसर इज सी। 39. The chromatogram shown is produced using a spot of black ink placed at point X. Spot M is produced by a blue dye in the ink. What is the RF value of this blue dye? So first of all, we need to find out the distance traveled by solvent front. So 16 minus how much? 16 minus 4 is basically 12 cm. This is solvent distance. Okay. Now we need to find out the solute distance. So this is 8, this is 4, 8 minus 4. 8 minus 4 is basically 4 cm. Am I right? This is 16 and this is 4. So 16 minus 4 is basically 12. This is 8 and this is 4. So 8 minus 4 is basically 4 cm. So 4 divided by 12 is basically. So in order to calculate the RF value, distance traveled by solute is 4, distance traveled by solvent is 12. So I'm getting 0.333. So 0.333 is C, right? C is going to be the right answer. My goodness, 40. The table shows the result of a series of tests with two substances X and Y. Yes, identification of cations और anions है। इसके आपको notes नहीं मिलते, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में भी। आपको ये याद करना पड़ेगा कंटेंट पूरा। Dilute nitric acid is added, no reaction, no reaction. Okay. Then aqueous silver nitrate is added, white precipitates, इसका मतलब chloride ion. So X contain chloride ion. The statement option A is incorrect. Result with Y, no precipitate, so no halide ions. If no halide ions, that means option B is also incorrect. Okay. Now the next is aqueous sodium hydroxide added, white precipitate, insoluble in excess. Okay. So this could be अच्छा calcium है हमारे पास, तो calcium is fine. A और B तो wrong होंगे तो उसको छोड़ दे. Combination exists between C and D, तो calcium और chloride हमने यहाँ से determine कर लिया. Then add aluminum foil, added warm gently, no gas produced, ammonia gas is produced. If ammonia gas is produced, इसका मतलब nitrate ions present. तो nitrate ions इसमें भी हैं, nitrate ions इसमें भी हैं. Obviously, orange red flame that confirms calcium ion. Yellow flame that confirms sodium ion, which is why D is going to be the right answer. Okay, so that's the end of this paper, guys. Thank you very much.